वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आइल्स विद दीपक। और आज हम देखने वाले हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आइल्स राइटिंग टास्क टू द essay paraphrasing। जी हाँ, there are number of students who been like complaining to me that or they are questioning to me all the time that rest part we can manage easily, but the paraphrasing part, the introduction part, we cannot manage easily. So what can be the effective way or what can be the effective method through which we can write the perfect paraphrasing and can get a good band score? So let's check over here. I have taken a sample question over here. The question is, the best way to improve health is to do regular exercise. To what extent do you agree? Okay, when you get a question, what you have to do is the first thing that check the question, read the question again and again until you get the exact concept, what exactly essay or the question is demanding, what the question is about। आपको पहले वो समझ लेना है initially। So यहाँ पे जो question है, it is claiming that the essay is claiming the best way to improve health is to do regular exercise। मीन्स इट इज सेइंग कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, इंप्रूव होती रहेगी। लाइक टू इंप्रूव द हेल्थ। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री। जैसे ही आपका क्वेश्चन आता है, रीड इट एंड स्टार्ट डूइंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के सपोर्ट में आपके पास कितने आइडिया है, कैसे आइडिया है, दैट यू विल हैव टू वर्क ऑन योर नंबर ऑफ आइडियाज, योर टाइप ऑफ आइडियाज एंड देन जंप टू द क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे पैराफ्रेज जो है, द पैराफ्रेज इज कंटेनिंग आई वुड से द थ्री पार्ट। आई वुड से मोस्टली द फर्स्ट वन इज द hook line। Okay, first is common, very common, there are number of students are using the hook line. Then comes the background statement। Okay, second one is a background statement and the third one is a thesis statement। Okay, now let's classify what these three things, like जब भी हम paraphrase करते हैं we have to focus on these three things first। First one is a hook line। Hook line is what? Hook line is an impressive statement। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मोस्टली हमारा जो क्वेश्चन है उसके साथ अलाइन करता है, मैच करता है। ऐसा यहाँ पे हमें हुक लाइन देनी है। कहीं बच्चे यूज करते हैं, मेजोरिटी आई वुड से it is not required in many cases or personally I don't use it। hook line is not that because hook line है क्या, it is a impressive statement, it is impressive English lines। और यहाँ पे याद रखिए दी essay, IELTS में जो essay है यहाँ पे आपकी आइडिया क्वेश्चन के साथ कैसे अलाइन होती है, आप कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हो, उसका स्कोर मिलता है, ना कि कोई फैंसी और इंप्रेसिव लाइन। सो इफ यू डोंट यूज इट, इट इज फाइन। हुक लाइन इज नॉट नेसेसरी। You will have to focus on the background statement। Background statement means this is the statement। ये जो है यहाँ पे द बेस्ट वे टू इम्प्रूव हेल्थ इज टू डू रेगुलर एक्सरसाइज दैट यू विल हैव टू पैराफ्रेज। ओके, आपको उसे पैराफ्रेज करना है प्रॉपरली द स्टेटमेंट ऑफ दैट थिंग। यहाँ पे जो दिया गया है वही आइडिया आपको रखनी है। यू विल हैव टू मेंटेन द सेम आइडिया एंड you will have to represent it again with different words, different style, different way। ऐसे आप इसे यहाँ पे different way पे आपको represent करना है। उसके लिए क्या कर सकते हो, you can work focus on first thing is your words, the vocabulary। यहाँ पे जो words दिए हैं कुछ अलग different synonyms, antonyms, participle, gerunds कुछ भी use कीजिए और replacement of phrases और clauses आगे पीछे कर दीजिए। तो वहां पे आपका पैराफ्रेज हो जाएगा। एंड देन कम्स द थीसिस स्टेटमेंट। द थीसिस स्टेटमेंट इज व्हाट, दैट वन। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री मींस योर क्वेश्चन टाइप थीसिस स्टेटमेंट, और इट कैन बी, आई पर्सनली से इट as 10 line that proves, that shows the examiner that the way you are taking the essay। क्योंकि Let's clear first what is that meaning, to what extent। इसका क्या exact meaning है? To extent in the sense how much,
द वैल्यू। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे आप कितना सपोर्ट करते हो, डू यू अग्री, दे आर लुकिंग फॉर योर ओपिनियन, दे आर आस्किंग फॉर योर ओपिनियन कि आप वहां पे कितना अग्री करते हो। इट कैन बी, आई वुड से 100%, somehow it can be 70%, it could be 50%। आप कैसे भी यहाँ पे इसे सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अप्लाई करते हैं। सो आई वुड से इट इज नॉट नेसेसरी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, इट इज डिपेंडिंग ऑन योर आइडिया। आपके जो आइडियाज है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे इसे कितने परसेंट तक, और आई वुड से द वैल्यू, कितने वैल्यू में इसको आप सपोर्ट करते हो कि द बेस्ट वे टू इंप्रूव हेल्थ इज द रेगुलर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आप 70-30, 100% और इवन यू कैन गो फॉर 50-50 स्ट्रेट अवे, क्योंकि इट इज डिपेंडिंग ऑन द आइडिया दैट यू आर सपोर्टिंग। किसके लेवल ऑफ आइडिया क्या है आपके, उसके ऊपर आप यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो। सो इट कैन बी योर पर्सनल ओपिनियन, यू कैन गो आइदर 100%, बट पर्सनली आई वुड से मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट फॉर 2 पैराग्राफ इन 4 आइडियाज, डिफिकल्ट होगा। इतना सारा मैं यहाँ पे ओनली एक्सरसाइज पे लिखना नहीं चाहता। तो व्हाट आई वुड से इज, ऐसा क्वेश्चन है मैं जनरली 50-50 जाता हूँ, क्योंकि ये नहीं और कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज अ स्ट्रेची स्टेटमेंट दैट शोज द एग्जामिनर दैट you are taking the essay in some way. It is your stand line. It is a statement. It is a line which shows or indicates the examiner that your essay would be containing so and so ideas. It is a statement that helps the examiner about to know or to know about your way of development of idea. So these are the 3 ways that you can focus, or you have to focus the hook line. It is not mandatory. Go for the background statement, rewrite it with different words, different way, but keeping the same meaning, and take your stand. The third one is a thesis statement. So let's start the paraphrase. कैसे किया जाएगा और कैसे करेंगे? The best way to improve health is, यहाँ पे मैंने इसका like paraphrase लिखा है, the other words like the best way. So it is indicating the way, the method. So I have used most effective method, the best method, the most effective, superlative degree, the best, the most. तो ऐसे ही मैंने उसका जो कंसेप्ट है, the meaning है, उसे सेम रखा है। The most effective method किस में? So to improve the health, to improve the health, it can be in developing and improving. यहाँ पे health है, यहाँ पे अगर आपको adjective यूज करना है, it can be human health। यहाँ पे आप कुछ words अगर आपको additional डालने हैं, you can add the adjectives, okay? So the most effective method in developing and improving human health, I'm removing this, human health is considered to be daily exercise. Okay, so health is to do regular exercise, considered to be the daily exercise, or considered to perform daily exercise, to perform, to do, to be, or to perform daily regular exercise. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट था हमने उसको यहाँ पे सीधा साधा स्ट्रेट अवे पैराफ्रेज कर दिया। इन द सेंस both the statements are looking different in terms of words, लेकिन it is having the same meaning। तो आपको ऐसे यहाँ पे पैराफ्रेज करना है of your statement। Then comes the to what extent do you agree। तो यहाँ पे आपने जब ब्रेनस्टॉर्म किया है, मीन्स के आइडिया आपकी जो डेवलप की है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर सकते हो, बिकॉज इट इज आस्किंग योर ओपिनियन। सो यू कैन से इन माई ओपिनियन, यहाँ पे ऐसे आप स्टेटमेंट शुरू कर सकते हो। इन माई ओपिनियन, इन माई परसेप्शन, देर आर सर्टेन वेज, डिफरेंट वेज है, बहुत अलग अलग, दैट यू कैन यूज, बट आई वुड से यूज द मोस्ट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन माई ओपिनियन, in my perception, I believe, I personally believe, in my belief,
दोज आर द डिफरेंट वेज. सो इन माय ओपिनियन अभी हमने क्या किया है, तो द वे आई हैव डेवलप्ड इज एज आई टोल्ड यू कि मुझे एक्सरसाइज पे भैया 250 वर्ड्स नहीं लिखने हैं, बहुत मैसी हो जाएगा, इट इज गोइंग टू किल माय क्रिएटिविटी इतना सारा. तो मैंने क्या किया, एक्सरसाइज तो ठीक है, लेकिन साथ में इक्वली इंपॉर्टेंस इज आर फूड इन द सेंस डाइट. ओके, हमारी जो डाइट है वो इंपॉर्टेंट है. सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो हेल्थ है इतना इनफ नहीं है. बंदा मान लो बाहर का फास्ट फूड खाता है 3 टाइम्स एवरी डे, कभी पूरा दिन खाता ही रहता है, तो एक्सरसाइज से कुछ बेनिफिट होगा? नहीं होगा. वी हैव टू मेंटेन द डाइट. चलो, किसी बंदे ने एक्सरसाइज डाइट दोनों मेंटेन की, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल वो कैसी है? लाइफस्टाइल मान लो कि ऑन टाइम खाता पीता नहीं, ऑन टाइम सोता नहीं है, आराम नहीं करता है, शरीर बॉडी को जो रीजनरेशन रिक्रिएशन के लिए टाइम चाहिए वो नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? फिर भी हेल्थ खराब होगी. तो वी कैन से एक्सरसाइज इज नॉट ओनली लाइक, यू कैन से इन माय ओपिनियन द बेस्ट वे टू. ओके, और एक्सरसाइज इज दी, यहाँ पे आप ऐसे उसे पैराफ्रेज कर सकते हो. आई एम रबिंग दिस और रिमूविंग दिस लाइक, इन माय ओपिनियन एक्सरसाइज इज दी. ओके, एक्सरसाइज इज दी primary way. It is a way and we have used over here method. So exercise is the primary way to get our health improved. हमारी जो हेल्थ है एक्सरसाइज से इंप्रूव होगी. गेट आवर हेल्थ इंप्रूव. बट मुझे ये भी कहना है कि सिर्फ एक्सरसाइज नहीं. सो मैंने क्या किया यहाँ पे, आई एम फोकसिंग ऑन डाइट. सो एड हाउ एवर, बट और हाउ एवर डाइट ऑल्सो प्लेज वाइटल रोल. ओके, हमारी जो डाइट है उसका भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है. तो ये हो गया हमारा स्टैंड लाइन. तो 50-50 हो गया. क्लियर? हमने बोला है कि एक्सरसाइज इज द प्राइमरी वे, एक प्राइमरी वे है, बट साथ में डाइट इज ऑल्सो देयर. तो ऐसे यहाँ पे आप सिंपल वे में भी लिख सकते हो, लाइक इन माय ओपिनियन एक्सरसाइज इज द प्राइमरी वे टू गेट आवर हेल्थ इंप्रूव. However, diet also plays vital role. इसे अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है, another way it can be, in my opinion, not only the exercise, but also diet plays a vital role. तो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो. So this is the perfect way, I would say, or perfect method to strike straight away on paraphrase. आपका पैराफ्रेज ऐसा होगा. तो अभी यहाँ पे जो मैंने दो वर्ड्स यूज किए हैं, तो फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज एंड सेकंड वन इज डाइट. सो व्हाट आई वुड डू, हाउ आई वुड डिजाइन और डेवलप माय बॉडी पैराग्राफ. सो मैं फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में दी वैल्यू और इंपॉर्टेंस और दी यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सरसाइज कितनी हेल्पफुल है वो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा इन बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ आइडिया, explanation and supportive example. And in second body para I will be focusing on diet, how diet plays or how it is important to maintain our health. तो यहां से क्या होगा, CNC cohesion and coherence मीन्स के हमारे बॉडी पैराग्राफ जो हमारे पैराफ्रेज से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं. तो CNC का भी we will have a good score. टास्क अचीवमेंट तो यहाँ पे जो है उसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो टास्क अचीवमेंट भी हो गया. वोकेबलरी थोड़ा बहुत चेंज करते रहेंगे, क्लोजेस, फ्रेजेस एंड काइंड ऑफ लाइक एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर, कॉम्प्लेक्स पैटर्न, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो सारा यूज करेंगे. सो आई एम श्योर इफ यू राइट योर एसे इन दिस मेथड you will have a good score. Friends, this is the best way to perform or to appear for your IELTS.
आपने अभी तक इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन में कंसर्न है या फिर कोई टॉपिक दैट यू फाइंड डिफिकल्ट और जो आपको वहां पे क्वेरीज लग रही है, तो नीचे कमेंट में लिखिए. आई विल रिप्लाई यू पर्सनली or I will respond you or I will make a new video on that topic. So keep watching your favorite YouTube channel IELTS with Dipak and keep improving your score for your IELTS.